Good evening, friends. My name is Karan Parvesh Singh, and you are watching RapidLeaks. त्योहारों का सीजन चल रहा है, बड़ा त्योहार निकल चुका है, शादियों का सीजन भी चल रहा है। हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं से किसी शादी को अटेंड करने के लिए आतुर है। त्योहार इतना बड़ा आके गया है, अभी बाजार में जाए बगैर मन नहीं लगता है। पर इस बीच में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कोविड को हम हल्के में ले रहे हैं। शायद इसी का शायद यही एक कारण है कि पीछे महीने भर के अंदर बहुत सारे कोविड केसेस आए हैं। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं से एक हाय तौबा मची है। हर सरकार, हर राजनीतिक दल, जहां जहां पर जिन स्टेट्स में उनकी सरकार है, वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ इस सेकेंड वेव को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो हर जगह सिर्फ एक मैसेज था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर लगभग 94 लाख केसेस हैं इंडिया के अंदर, और जो दिन प्रतिदिन नंबर आते जा रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि या तो हम कोविड को अब अपने जीवन का हिस्सा मान चुके हैं और हमें ये लगता है कि कोई बात नहीं है, सर्दी बुखार जैसी एक शिकायत है, थोड़े समय में दूर हो जाएगी। बट वहीं पर आप ये भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि कोविड सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों को हिट कर रहा हो। राजनीतिक रैलियां भी होती हैं तो भी कोविड को दरकिनार रखा जाता है, कोई प्रदर्शन होता है तो भी कोविड को दरकिनार रखा जाता है। कहीं ना कहीं से ये देखा जा रहा है कि जहां पर सबसे पहला एक रूल कोविड के लिए डिसाइड किया गया था वो था मास्क पहनना और 6 फीट की दूरी रखना, पर हमने उस रूल को हाशिए पे रखा हुआ है। बहरहाल ये तो हमारी हालत है, लेकिन कोविड के अंदर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि यूके गवर्नमेंट ने फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन है उसको अलाउ कर दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक दे विल स्टार्ट वैक्सीनेटिंग देयर सिटीजन्स। इस बीच में कहीं ना कहीं से आज सारा दिन सोशल मीडिया पर ये एक मुद्दा छाया रहा कि भारत में वैक्सीन कब आएगी। अगर भारत में वैक्सीन आएगी तो उसके साथ बहुत सारे सवाल ये भी उठते हैं कि क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो इतना कारगर साबित होगा कि हम उसे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। क्या प्रायोरिटी होगी, कौन से ऐसे लोग होंगे जिन्हें पहले वैक्सीनेट किया जाएगा? विल इट बी द हेल्थ वर्कर्स और विल इट बी द पीपल हु हैव सर्टेन एज? विल इट डिपेंड अपॉन the condition or the people who are already you can say are going through any other disease? रास्ता क्या होगा, कैसे होगा, आज इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हमारे आज के गेस्ट को ऐड करता हूं। डॉक्टर पंकज सोलंकी जी, स्वागत है आपका रैपिड लीक्स पर। गुड इवनिंग परेश जी। डॉक्टर पंकज सोलंकी जो है वो अपना हॉस्पिटल रन करते हैं दिल्ली रोहिणी में, डॉक्टर धर्मवीर सोलंकी हॉस्पिटल के नाम से। दिल्ली में मेडिकल एसोसिएशन के ये मेंबर हैं, और पिछले जितने समय से मैं जानता हूं, आई थिंक आपका पूरा हॉस्पिटल जो है डॉक्टर साहब वो अभी कोविड पेशेंट्स के लिए ही बुक्ड है। हाँ जी जी, तो आपने भी ये खबर पढ़ी होगी डॉक्टर सोलंकी कि यूके ने जो है वैक्सीनेशन, जो फाइजर की वैक्सीनेशन उसको अप्रूव कर दिया है, जिसकी एफिकेसी जो थी वो लगभग 90% बता रहा था। 3 मेन कंपनियां हैं जो अभी तक, हालांकि रशिया वाली कंपनी भी अभी 90 अबव का डेटा अपना शो कर रही है ट्रायल्स के दौरान। इंडिया की कोविशील्ड जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बन रही है, प्रधानमंत्री जी भी अभी 2-3 दिन पहले वहां जाकर आए थे, वो भी अपना ट्रायल फेसेस में है। तो आपको क्या लगता है, यूके ने जल्दी की है वैक्सीनेशन को पब्लिक करने में, या ये सही स्टेप है? आपकी क्या राय है इस न्यूज पर? देखिए, जो यूके का जो फाइजर कंपनी ने जो वैक्सीन अभी लॉन्च कर दिया है, यूके गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, इट वाज स्टिल इन द फेज 3 ट्रायल। फेज 4 ट्रायल वाज स्टिल पेंडिंग। जो फेज 4 ट्रायल है वो एक लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए किया जाता है टू वॉच फॉर द साइड इफेक्ट्स, द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स और द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। बट बिकॉज की पेंडेमिक चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन लोग अपनी मतलब अब तक जा चुके हैं, और करीब करीब हर कंट्री इससे सफर किया है, इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई है। तो आई बिलीव उन्होंने थोड़ा जल्दी किया है, बट वी नीड टू वेट एंड वॉच कि वो फाइजर कंपनी का जो अभी साइड इफेक्ट्स आएगा, या जो भी ड्रग्स का अगर कोई वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट आता है तो क्या होगा। वी स्टिल नीड टू सी दैट। क्या फेज 3 ट्रायल में यू कैन नॉट एस्टैब्लिश द एग्जैक्ट सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स और द एडवर्स इफेक्ट्स,
उसके लिए फेज 4 इज वेरी मैंडेटरी। ओके। तो अभी तक जितने भी वैक्सीनेशन की न्यूज आई है, इनमें से कोई भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो फेज 4 तक नहीं पहुंचा है। एम आई करेक्ट इन दैट? फेज 4 तक अभी तक नहीं पहुंचा है कोई भी। जी। तो मेन मैं अपने व्यूवर्स को बता देता हूं कि मेन जो 3 कंपनियां अभी तक अपनी न्यूज में रही हैं कि उनकी वैक्सीनेशन जो है, उनकी एफिकेसी जो है वो मोर देन 90% आ रही है, दैट इज फाइजर, Moderna and Oxford AstraZeneca, which is in collaboration with Serum Institute of India. The third one, I'm talking about the Oxford one. अभी कुछ समय पहले ही, मतलब इनफैक्ट कुछ घंटे पहले ही मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था डॉक्टर सोलंकी, जहां पर एनडीटीवी ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी कि फाइजर तो शायद इंडिया में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी ट्रायल की एप्लीकेशन यहाँ पर डाली ही नहीं। इज दैट करेक्ट? Yeah, I'm not sure about that. I cannot comment about that since I don't know कि वो यहाँ इंडिया में आ सकता है नहीं आ सकता है. Once it is approved by the UK government, and if we do not see any side effects or the adverse effects in maybe in 4 or 5 months, then of course the government can procure the Pfizer vaccine as well. जी। ओके। अभी एक और काफी मुद्दा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों ने इसको नकारा है। एक केस सामने आया है, 40 ईयर चेन्नई रेजिडेंट who volunteered for the vaccination trial and he has said that he has got side effects, और आई थिंक उन्होंने कुछ 100 करोड़ का एक मुकदमा भी दायर किया है। हालांकि भारत सरकार ने भी अभी कुछ समय पहले ही एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। सो अगेन माय क्वेश्चन कम्स टू दिस कि क्या इज इट टू अर्ली टू वाउच फॉर अ वैक्सीनेशन और इज इट द नीड ऑफ द आवर? One thing मैं थोड़ा इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करता हूँ कि one thing it is need of the hour, but it is too early to ask for. क्योंकि आप कोई भी वैक्सीन स्टेट अगर सोचते कि वैक्सीन अगर आ जाएगा और कुछ मिरेकल हो जाएगा, इन केस वी हैव द वैक्सीन, मैं सबको ये बोलता हूँ कि होली से होली चलेगा कम से कम, होली मार्च में आएगी, तो मार्च से पहले एक्सपेक्ट करना इज वेरी, मतलब कि मैं क्या बहुत बेमानी है कि उसको आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। इन केस इवन वी स्पीड अप द प्रोसेस, जो कि स्पीड अप कर रखा है गवर्नमेंट ने, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज लुकिंग आफ्टर द वैक्सीनेशन थिंग एज ऑफ नाउ, कि हाउ द वैक्सीन्स आर बीइंग वैक्सीन थिंग इज बीइंग गोइंग ऑन। अभी जो पीएम ने किया है कि पीएम ने हर स्टेट के हर सीएम को डायरेक्शंस दी हैं कि आप अपने यहाँ का हेल्थ केयर वर्कर्स का या फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब का डाटा आप इकट्ठा करके हमें दो, ताकि हम वी शुड सी कि हमें कितनी इमीडिएट बेसिस के ऊपर प्रोक्योर करनी पड़ सकती है। तो अभी बहुत दूर है, और वैक्सीन के लिए के ऊपर डिपेंड होना कि वैक्सीन आएगी तो कुछ होगा, इससे बेटर है यू हैव गॉट द वैक्सीन, द मास्क एंड द सैनिटाइजर्स, they are your vaccine. Use them wisely, you'll not be infected. I know people who are working in the hospital, doctors and healthcare workers, and those who have been working in the ICUs, COVID ICUs, and they have got the infection. आप अगर प्रॉपर प्रिकॉशन तो इन्फेक्शन का चांस नहीं है बहुत। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान ये सोच रहा है कि एक बार वैक्सीनेशन अगर हो गई या वैक्सीन आ गई तो उसके बाद जो है ये वायरस का गेम खत्म और हम खुला जैसे पहले घूम सकते थे वैसे घूमेंगे, उसी तरीके से होली ईद सब सारे त्योहार मनाएंगे, शादियों में जाएंगे? तो क्या क्या ऐसा होगा वैक्सीन लगने के बाद, क्या आप कंप्लीटली इम्यून हो जाएंगे इस वायरस से? नहीं, इसको वैक्सीन लगने का तो बहुत दूर की बात है। अगर जनरल पब्लिक को अवेलेबल होगी भी तो बेस्ट पॉसिबल 2022 से पहले अवेलेबल नहीं हो सकती किसी भी हाल में। अगर आप नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो मोदी जी ने बोला था कि कोविड वॉरियर्स, उनको अगर लोगे तो वही आपके 8 से 10 करोड़ निकल जाएंगे जी। और आपकी हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के करीब है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वैक्सीन अगर आ भी जाती है, लेट्स से कल भी आ जाती है, तो 140 करोड़ आदमी तक वो कैसे पहुंचेगी, वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है जी। लगभग 9.5 मिलियन केसेस जो हैं अभी एक्टिव हैं। पिछले एक महीने भर के अंदर ये केसेस के अंदर जो स्पाइक आया, डॉक्टर साहब, क्या इज इट बिकॉज मीडिया के अंदर वैक्सीनेशन की खबरें बहुत ज्यादा आ रही थी, या कहीं आपको लगता है कि सरकार या इंसान या जो आम नागरिक है वो रिलैक्स हो गया था ये सोच के कि ये तो जीवन का हिस्सा बन गई है? नहीं, ना तो उन्होंने कभी इसको जीवन का हिस्सा माना, ना उनको इस चीज पे भरोसा था कि वैक्सीन आ जाएगी, वो रिलैक्स हो गए सिंपली। उनको लग रहा था बीच में जो एक वेव थी हमारी समवेयर अराउंड जुलाई से लेके अक्टूबर तक, बहुत माइल्डर फॉर्म था और बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुई है इंडिया में।
जी तो लोगों को लगता था हाँ सब ठीक हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ जो पेशेंट प्रेजेंट करता है हॉस्पिटल में, मतलब मैं 6 महीने से हम कोविड पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो पिछले 1 महीने में जितना पेशेंट सिक हमारे पास आया है वो पिछले 5 महीने में नहीं आया है हमारे पास इतना से टोटल जी पेशेंट सिक। तो लोगों ने अ, बहुत रिलैक्स, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग द फेस्टिवल सीजन। उन्होंने शादियां भी एंजॉय की हैं, सब कुछ किया है। दे वर डूइंग एवरीथिंग जो भी नॉर्मल हो रहा था। इट मतलब आप इंडिया की मार्केट्स देखते हैं तो वहां पर तो कुछ था ही नहीं, जी लगता ही नहीं था देख कोविड का या कोरोना का कोई महामारी भी चल रही है। जी डॉक्टर साहब, ऐसे कई अभी मैंने एक क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश किया है। वन ऑफ द व्यूअर हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और नॉर्मली मैंने ये देखा भी है कि अगर कहीं आप किसी समारोह में जा रहे हैं, यार दोस्तों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एक ये सवाल उठता है, तो व्हाई नॉट टेक एन एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन दिस। आप देख पाएंगे रवि भास्कर जी पूछ रहे हैं कि आई रेड समवेयर यूजिंग टू मच सैनिटाइजर कॉजिंग स्किन प्रॉब्लम्स, इज इट ट्रू? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। आप अल्कोहल बेस्ड एक सैनिटाइजर यूज करें जो कि स्किन को बिल्कुल ड्राई करेगा। जी मैं बिल्कुल लेमन में बताऊं, स्किन को ड्राई करेगा। ऑफ कोर्स वो उनको आपको इचिंग भी होगी और इट मे कॉज यू अदर अदर थिंग्स एज वेल। तो आपको अगर इस टाइम पे स्पेशली विंटर्स में अगर आपको यूज करना है तो यू नीड टू यूज द मॉइस्चराइजर एज वेल। आपको स्किन ओके का मॉइस्चराइजर खत्म कर रहे हो यूजिंग द अल्कोहल प्रोडक्ट। जी। सो डॉक्टर साहब, एक और मैं पढ़ रहा था, एक सर्वे कंडक्ट किया गया लोकल सर्कल्स के द्वारा। इट्स एन एजेंसी विच कंडक्टेड दिस सर्वे, जिसके अंदर लगभग 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड दिस सर्वे वाज कंडक्टेड अक्रॉस 262 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। नाउ वन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे सेज कि भी फरवरी 2021 तक ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन आ जाएगी, बट 59% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे सेड कि वैक्सीनेशन के आते ही वो उसको लेने के लिए भागेंगे नहीं। सो डू यू स्टिल थिंक कि इज इट कहीं ना कहीं से, हाँ, एक दिमाग में एक मार्केट के अंदर ये हाइप अब आ गया है, खासकर यूके की परमिशन के बाद। आई एम श्योर देयर वुड बी मेनी एजेंसीज एंड पीपल हु वुड बी थिंकिंग कि अब तो वैक्सीनेशन आ गया है, अनदर 2-3 मंथ्स। बट जब हम डेटा देख रहे हैं, हालांकि सैंपल स्पेस बहुत छोटा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के आगे 25,000 कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता, बट डू यू जी, थिंक इज इट अ गुड स्टेप टू वेट एंड वॉच? अगर वैक्सीनेशन लॉन्च भी होती है, इज इट अ गुड स्टेप टू वेट एंड वॉच? सी यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं उसी चीज पे एम्फेसिस डाल रहा हूँ, अगर वो आ भी जाता है इट विल जी टेक टाइम टू रीच पीपल। वो शायद ओके हम लोगों तक एक कॉमन मैन तक जाने के लिए उसको 5-6 महीने 8 महीने लग जाएंगे। जी There's no point in panicking. यूज मास्क, मैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूज मास्क एंड आप सैनिटाइजर या हैंड वॉश जो भी आप कर सकते हैं, यूज दैट। जी। गवर्नमेंट ने भी एक स्टेटमेंट दी है कल ही, इंडिया टुडे, इनफैक्ट आज के ही एक इंडिया टुडे के आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था, द गवर्नमेंट हैज सेड कि अगर वैक्सीनेशन इंडिया में लॉन्च भी होता है तो इट इज नॉट नेसेसरी टू वैक्सीनेट द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दे जस्ट वांट टू गेट अ ब्रेक थ्रू, दे वांट टू स्टॉप द ट्रांसमिशन। So how do you agree with this? How do you approach this statement? सी द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रेक द ट्रांसमिशन, बट थिंग इज दैट जो पहले हमारा डोर टू डोर या एक बिल्कुल ही अब गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड येट, शायद पता मतलब जहां तक मुझे पता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। आप कैसे जी चेन को ब्रेक करना चाह रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि आपको okay कम्युनिटी उसको चेन को ब्रेक करने के लिए भी यू नीड एटलीस्ट 80 to 100 million of vaccines. You okay just cannot break them overnight. You will जी you want to inject you want to inject you want to give people the vaccine, जो भी हमारे ससेप्टेबल लोग हैं या हाई उसमें रिस्क में हैं, मे बी हेल्थ केयर वर्कर्स, मे बी टीचर्स, मे बी सैनिटेशन वर्कर्स, मे बी पुलिस वाला, you want to give जी them, but still how do you plan to break it up? They have not जी answered to that question ki how break up that. exactly. Do you think we as a nation have any advantage if the vaccination is launched? I mean, for the distribution part, because having procuring vaccination is a different task. But I have read somewhere that, especially in the Pfizer case, that the storage facility has to be ultra cold. And Yes. do we have that infrastructure? On the other end, Serum Institute has said
that anything between -2 to -4 degrees would be enough to keep. And in fact, they are saying that maybe at the room temperature we would be able to sustain the vaccination. So आपको लगता है कि अभी इंडिया के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि वैक्सीनेशन को इतने बड़े स्केल पर हम स्मूथली मुहैया करवा सके हर जरूरतमंद को? नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। आप देखो, इंडिया करीब 25 से 30 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। तो आप रफली लेके चलिए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास करीब 50 से 100 हेल्थ पीएससीज हैं, और पीएससीज के पास स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। तो इस चीज का इशू नहीं आने वाला। पर इन केस कल को वैक्सीन अगर आती भी है, तो व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज द ब्लैक मार्केटिंग। तो इंडिया विल हैव टू लुक इनटू इट, द कंट्री विल हैव टू लुक इनटू इट कि ब्लैक मार्केटिंग कैसे स्टॉप करें। दे विल हैव टू जनरेट सम यूनिक आईडी और सम मे बी अ यूनिक नंबर कि इसको मिल चुका है, इसको नहीं मिला है। मे बी दे विल लिंक इट विद द आधार, दे विल डू समथिंग लाइक दैट, दे विल हैव टू डू। क्योंकि इनिशियली इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई इंजेक्शन रेमडेसिविर का जैसे ब्लैक मार्केटिंग हुआ है, वो बहुत ही एक अलग लेवल पे हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आप दिल्ली में हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। अभी जो टेस्ट है कुछ एक हफ्ता भर पहले उसके प्राइसेस डिसाइड हुए 800 रुपीज। अर्लियर इट वाज completely 2100, 2400, different prices with private organizations. Do you think that this step was taken a little late? Was it a hindrance for regular testing? Maybe people were not coming up and taking tests की कॉस्ट ज्यादा थी? नहीं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मैं दिल्ली में कहूंगा कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डेली रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर फ्री में हो रहे थे। तो आई बिलीव कि दिस कैपिंग वाज नॉट हिंड्रेंस इन गेटिंग द पीपल टेस्टेड। आज भी जो दिल्ली का है, अभी जो डेटा है आफ्टरनून में, आज भी कल भी 80,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। So that's a huge number. That was not at all a problem. Maybe कुछ लोगों के लिए हो सकता है, but that was not actually a problem. But हाँ, making it 800 or 200 is a very good step. Okay. आप जो ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहे थे, वी हैव सीन दैट, और आपने बहुत सही एग्जांपल ये पिक किया। आई थिंक देयर इज अ कोर्स ऑफ 5 इंजेक्शंस इफ समवन इज कंप्लीटली इन अ स्टेज वेयर द कोरोना इज मोर पोटेंट। नो, ओके। सो कहीं ना कहीं से व्हाट डू यू थिंक व्हेन द वैक्सीनेशन will be launched, the UK government has already released a list of priorities that whom they are going to vaccinate first. They have given a 10 point listicle in which they have told that the first one to get vaccinated would be the health workers, the front line, the people who are actually fighting COVID. And then they have given the preferences to aged people with certain diseases, and so on, so forth. So when it comes to India, what would be the Indian government stand, or the medical body? How will they filter it out? Doctor Saab? Your voice broke. Okay. I think... repeat that. It's fine now, I believe. Did you... Okay. Did you get my question? Shall I repeat? Please repeat. So I was saying that, like, UK government has already released a, a document stating that this is going to be the order of preference for vaccinating people. So will we follow a similar model here in India? Do you think that that would be feasible here? Or will it be like whosoever has a better position or power can use it first? Because many of the viewers are asking the same question to me over the live chat, that would be first vaccination. I mean, who will get vaccinated first? See, Pravesh, this thing will be followed globally. हर कंट्री में, हर जगह पे, हर सिटी में, the healthcare workers and the frontline workers will be vaccinated first. Okay. Because you need to save your saviors first, and then you actually move on to the susceptible population, or the people who are more susceptible or with the comorbidities. Then you actually move towards them. Okay. I have another question here from one of the viewers.
I'll just bring it to the screen. So कहीं ना कहीं से ये आई थिंक हमारे जो एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे सवालिया निशान उठा रहा है. I'll read it out for other नहीं, viewers. Dr. Saab, what will you say? Ji. So how much do we have trust in the testing system? How can we be sure that whosoever has got tested has got the right results? see, Mr. Virbhan Saab must be talking about the rapid antigen test. The sensitivity and the specificity of rapid antigen test is not very good. Okay. What we decide, in last 6 months, I have not advised a single person for rapid antigen test. I always advise for RT-PCR. That is more reliable. We go for rapid antigen test. Rapid antigen test may be negative, but Okay. RT-PCR, if the person is having symptom, the RT-PCR will definitely comes out to be positive. So RT-PCR is a gold standard test, and we need to follow that only. Okay. Dr. Solanki, another question which just popped up in my mind, and agar, let's assume what government agencies are saying that Feb 2021 or March 2021 we will have the vaccination. Once we have the vaccination, and let's say the distribution network, the storage network, everything is in place, it works fine. Still, as you said yourself in the beginning of this interaction, that phase 4 is yet to be covered, and it is something that will be a deciding factor. Keeping, if I'm not a doctor, whatever am I sharing? I'm sharing over what have I read from different people. The test that we are doing at this moment, or this infection, is related to the mucus. Am I right in that case? Yes. Dr. Yes. So I was reading it somewhere. I think the article is with Times of India, and one of the senior members of Delhi Medical Association has pointed it out that 90% efficacy that Pfizer and other companies are showing, that should be actually something close to 50 to 60%, because no vaccination would be able to act so well on the mucus part. I forgot the technical term for that. Maybe you can help me out with it. Is that the case? I mean, this 90% success rate is this because of a small sample space, or how to take it? It is because of small sample size. See, in phase 3, you maybe take 1,000 or 2,000 per person for trial purpose. But when it comes to the Okay. phase 4, you actually go for thousands of you go with thousands of people for the trial, Okay. and then you actually watch for the symptoms or the efficacy and everything. To talk about the Okay. efficacy in phase 3 is not a very good thing. We need to wait for the phase 4 results. Then actually we might have जो साहब ने कहा कि 50 से 60 में भी 70% हो. But it could be Okay. that. It Okay. could be that. So once I'm vaccinated, let's assume I get vaccinated first because I interviewed you or I spoke to you over RapidLeaks, and I take that advantage. Will I be roaming around happily without mask, without sanitization, without social distancing norm? Will that be possible? Maybe for another 8-10 months, no. It's No. still not Okay. possible. And what is the reason? Let's say what I have heard is there would be two doses for vaccination. Right. So once I got vaccinated, what is the danger that I still might face apart from the Many. side effect? Many. Apart from the side effect, I cannot say that. I didn't mean to say that after the vaccination, you need to wait for 8 to 10 months. But what people need to understand कि having mask, using mask is a new normalcy. एक नया Right. normal है. And you need to जी, understand that. We all need to understand that कि नया normal है. Even if you get the vaccine, even if you don't, what if the vaccine has the potency of only 60%? Do you still right. want to take a chances for 40%? I believe no. I think India, whole of India is taking chances without even a vaccination. So I Yes, somehow we are fear deep optimistic. down in my heart We that are people very may, optimistic. yes. All put Anything else into that you would, anything else? I mean that you are from this fraternity. You are fighting the COVID at the front line. So
do you have you read anywhere that there might be some side effects of this vaccine, or I mean the vaccinations which are proposed? No, no, it's too early because the data is still with the companies Moderna and the Pfizer and the Oxford. The data is Okay. still not revealed. So it's Okay. impossible to comment upon that. Our viewers would like to know that for sampling or for what do we call it, the trial phases, how Hmm. the individuals are chosen. Are they chosen as a healthy individuals, or is it Yes. random? And it is a random and the healthy individual people as well. Okay, so anyone who is suffering from any other disease may not be given a chance. Anyone who might be suffering from COVID might get a chance, might not get a chance. Apart from that, Okay. we also pick normal healthy people. Okay. ग्रेट. सो डॉक्टर सोलंकी, वी विश कि जो ये एक पॉजिटिव खबर आई है कहीं ना कहीं से महामारी के दौरान या पेंडेमिक की वजह से द होल वर्ल्ड वाज पैनिकिंग, एंड वी हैव सीन लॉसेस एट ग्रेट लेंथ. अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस, वी हैव सीन द ह्यूमन लाइफ गॉन फॉर अ टॉस. लोग कहीं ना कहीं से सेकेंड वेव से घबराए हुए हैं कि जो फ्लू आया था, I forgot the name of that flu 100 years back. Maybe you can help me with that. It just skipped my mind. Spanish flu, if I'm wrong. That took many lives. So it is said that Spanish the flu was the worst thing. okay, and it is said that during the second I wave can it talk on length took the about Spanish maximum flu. life. I'm sure you can. I'm sure you can. So it is Yes. said that the second wave of Spanish flu was more dangerous and it took more lives than the first wave. Do you think somehow the corona being Yes. taken lightly can raise the similar situation? See, it has already taken that situation. अभी भी वही situation है हमारी second wave वाली. Okay. Up, you cannot predict. I've seen healthy people getting randomly tested for a rapid this RT-PCR or rapid antigen, and they turn out to be positive. And what they say, we are totally asymptomatic. Okay. There's a situation already, and the people with the comorbid conditions, the people with the age group of more than 50, 55 plus are more vulnerable. They are the one who are who have succumbed to the disease. Healthy people have recovered. The young and the healthy people have recovered easily. So we Okay. need to understand कि अभी भी वो second wave चल रहा है. It has not gone anywhere. When was the single day when the It's media did not talk about the COVID or the COVID impact? It's still there, and it true. will be there till we have for another year or so. Okay. So, Dr. Solanki, anything advisable that you would like to share with our viewers today? And then I know that you are still in hospital. I can see your dress, and you might have to attend to different patients. So, any wise words for the viewers for COVID, obviously? Use use mask. That is your vaccine. You have your vaccine. Do Okay. not wait for the government to do some magic or some people or some companies to do some magic. Use your vaccine, and your vaccine is your mask. Okay. Sure. All the viewers, whosoever is watching or whosoever gets a time to watch it later, I seriously feel that what Dr. Solanki is saying here is really nice. You already have a vaccine with you. Do wear your mask. Use sanitizer. I think maintain the social distancing as well. That is one of the causes which we have lost somewhere. Social distancing. I normally do not see it in my daily life, and I don't know what would be the condition in rest of the India. So thank you very much for sparing out time, Dr. Solanki. I know, and we wish you luck, and we thank you a ton for fighting at the front line and saving many lives. Thank you, Paresh. Thank you, Dr. Sir. So, viewers, see, what Dr. Solanki was saying was right. Somehow the results are out for third phase only. We have to wait for the fourth phase as well.
And when he says that we do not know the potency of the vaccine, it would be visible with time. We will be able to see the side effects as well. And still, I think this pandemic causing disease or this virus is new to the medical fraternity as well, and they are trying to cover almost all the aspects related to the vaccination as well and related to the virus as well. So we have to act a little more responsible. We just cannot rely these people. They are putting their life on risk for us. They are fighting COVID daily, and all we have to do is we have to make sure that we wear masks, we sanitize, we follow the social distancing, and we make sure that we do not fall sick to COVID. And as government is also suggesting, and Dr. Solanki was also hinting, that even if we get the vaccination in India, it will take some time to roll out to the whole population, and it will take some time to adapt with the body. Even if you are vaccinated today, and if you think that from tomorrow on you will not get COVID, that sounds like a distant possibility. So it's a request to all the viewers that please follow the COVID norms, and let's make sure that we come out of this battle as a winner. Enough sacrifices have been made by these people, the frontline team, for saving us. And believe me, they have restricted the impact to minimum. All we have to do is to stand with them, to thank them, and to make sure that we wear mask. So if you have any other topic in your mind which you think that can be covered on Rapid Leaks, do leave it in your comment in our comment box. And thank you very much for joining in today. Good night.